Okay, good evening, students. The topic given was depression that I need to discuss today. But I want to make a disclaimer here at the very onset, and I want to clarify a few points. Depression has become a very common word being used nowadays. अरे मुझे डिप्रेशन हो गया है, अरे उसको डिप्रेशन हो गया है. डिप्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो चलते फिरते हर किसी को हो जाती है और आज होती है और कल नहीं होती है. So the point here is half of my presentation is all about what is not depression. Okay. And then at the end, I would be talking about depression because that is also from where you need to pick up. I will be giving you the source. So let's begin. Here, this is the flow of the presentation. In this, I need to add just one more thing, depression, the clinical depression, sorry, not just depression. Yeah, like this. So difference between sadness and depression, then mood swings, then physiological needs, then mental health, and then finally what clinical depression is. Sadness. How much do you know about emotions, feelings, emotions? If you know, raise your hand. If you don't know, I will continue. Okay, I'm continuing. There are two terms we have heard in English, feelings and emotions. अब इसका हिंदी है मुझसे मत पूछना, ठीक है? Feelings क्या है and emotions क्या है? They are two different terms. Feelings वो होती हैं जो हमारी बॉडी से बाहर होती हैं, emotions जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं. ये चाहे हम इमोशन बोले या इमोशन जो है वो हमारा रिएक्शन है टुवर्ड्स अ सिचुएशन, टुवर्ड्स अ स्टिमुलस आउटसाइड ऑफ अस. जब हम दुखी होते हैं, अरे इसको ना बड़ा कष्ट है, ओ शी इज गोइंग थ्रू बैड टाइम्स राइट नाउ. So we appreciate, we have sympathy for somebody, we understand somebody's mental state, what the person is going through is at feeling level. But the moment there is a change in my body, means, oh, she's very sad today, and oh, she has had a breakup, or somebody is no more, and that is why this person is very sad today, not herself, and then I also start crying. मेरी बॉडी में भी वो चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं. Then this becomes emotion. Means हमारी बॉडी में जब चेंजेस आते हैं, अगर मान लो somebody is scared, हम कहते हैं नहीं डोंट वरी, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है. बट हमें डर नहीं लग रहा होता है. लेकिन जब मेरे सामने कोई डरता है और मुझे भी डर लगने लगे, मेरे भी पाल्पिटेशन हो जाए, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाए, ओ माय गॉड पसीना छूट जाए, तो बॉडीली रिएक्शन जब आ जाता है, then that is called emotion. Is it clear? These two terms, feelings and emotions. डिप्रेशन जो है वो इमोशन नहीं है, लेकिन जो सैडनेस है वो इमोशन है. ठीक है, देखो ये सैडनेस इज अ नॉर्मल रिएक्शन टू लॉस, डिसअपॉइंटमेंट, प्रॉब्लम्स, लोनलीनेस और एनी डिफिकल्ट सिचुएशन. जैसे कई बार, जैसे हम मेरे यहाँ, मैं भी राइट नाउ मैं लखनऊ, तो कल से बादल हैं, धूप नहीं निकली है, और आज झिमझिम बारिश हो रही है, बड़ा ग्लूमी सा मौसम है. अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी दुख है और मैं बाहर जाकर घूमूंगी, टहलूंगी या बालकनी में बैठूंगी, सो आई विल फील मोर सैड. सच अ ग्लूमी डे टुडे, because there is no light, there is no sun, there is no brightness around me. But if I am a poet, if I am a romantic person, wow, क्या मौसम है, डिपेंड करता है. सो ऐसे एनवायरनमेंट में जब हम दुखी होते हैं तो हमारा जो आसपास का जो रोशनी का जो इफेक्ट होता है, इवन द कलर्स दैट वी वेयर और द कलर्स व्हिच वी सराउंड आवरसेल्व्स विद, दे आल्सो हाइटन दैट मूड. जो हमारा इमोशन होता है, दैट गेट्स हाइटन्ड. इफ आई एम सैड, आई विल बिकम मोर सैड. इफ आई एम एंग्री, ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. सो दिस इज सैडनेस, अ सेंस ऑफ लॉस. प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गई हूं, आई एम वेरी लोनली, नोबडी टू टॉक टू. ऑल ऑफ दीज आर सैडनेस. ये आता है और ये चला भी जाता है.
Depression, on the other hand, is a mental illness. It affects all aspects of my life. Ki either I will be continuously sleeping, or I will not sleep at all, or I will continuously eat, or I will not eat at all, or I will be just sitting idle like this, and hours will go by. And मुझसे के पूछी, how long have you been here sitting like this? अभी तो मैं बैठी थी. Means the sense of time lapse is not there with me. I lose interest in my personal hygiene. Nahi naya, tin din nahi naya. I don't feel like getting up from my bed. It is basically a cluster of too many things, not many signs and symptoms. Then coming to here, I have collected these pictures so that we can, सैडनेस वर्सेस डिप्रेशन. मुझे बहुत अच्छा लगा. अगेन इंटरनेट से लिया हुआ है, व्हाइट स्वाइन फाउंडेशन का है. ब्यूटीफुल. Somebody snatched my favorite necklace in the marketplace. This is going to create sadness. You seem to be constantly worried about something. Is everything all right? Means मुझे पता भी नहीं है कि actual cause क्या है, but generally I am not happy. Day in, day out, I don't know how to be happy. It is as if happiness is something alien to me, right? And there is no reason, just no logical reason I can pinpoint because of which I am feeling sad. Oh, that was such an awful interview. Lately, Mohan is frequently absent from work, and when he does turn up, he speaks rudely. Means यहाँ पर constantly this fellow is irritated. छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पर टेम्पर लूज करना, कोई कंसंट्रेशन नहीं, फोकस नहीं है, क्या करना है क्या बोलना है उसमें कोई कनेक्ट नहीं है. अभी यहाँ पे सामान रखा, भूल गए, पता ही नहीं कहाँ सामान रखा हुआ है. दिस इज अ कांस्टेंट फीचर. मींस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दीज थिंग्स हैपनिंग एंड नॉट गोइंग अवे. God, I studied so hard and yet I couldn't pass my exams. This is going to create sadness. But here, my son seems to have lost interest in his studies. It's been a month since he has gone to college. He does not speak to us at all. I am really worried. Here, something need to be worried about, actually. इसको बड़ा कर दें because, yeah. Sniffy, it's all over. What do I do now? Break up again. I'm useless. It is hopeless. Nobody cares about me. Oh, it's the end of my world. I am useless. Nobody loves me. I am nobody. These are constant thoughts, and these thoughts create constant emotion, and they don't go away. This is depression. Yeah, here it is. I have gone bankrupt due to a huge loss in my business. I just don't know what to do now. Now, this is a situation. And that is why this emotion. But I am fine. Nothing is wrong with me. But still, plus depression is also masked, by the way. Many times, people have become so expert in hiding their emotions. We all have become. Some people are more expert than others. Because since our childhood, we have been taught, do not cry in front of others. Do not share your emotions. Do not express your emotions. हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं अपने इमोशंस को छिपाने में एंड एक्ट आउट करने में कि हमें कई बार खुद ही पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है. हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं. लेकिन there is a constant nagging. It is a burden. मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ हूँ, बट कितना बोझा है. घर आकर के जब मैं बिस्तर पर पढ़ती हूँ तो वाव, आराम मिला. मीन्स हंसना मुस्कुराना भी एक बोझ लगता है. फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना एक बोझा है, वेस्ट ऑफ टाइम है. और जब मैं अपने बेड पर चुपचाप पड़ी रहती हूँ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, टाइम का पता नहीं चलता है. दैट गिव्स मी रिलीफ. दैट इज डिप्रेशन. फिर से बड़ा करना पड़ेगा. ओके. So, I was so looking forward to this trip. Now this trip got cancelled. Okay, something else will come up. I will bounce back to life. But here, everything is fine, and yet
Why do they feel so? Why do I feel so low? As if शरीर में जान ही नहीं है. Loss of energy, drained out feeling होती है. And yeah, this is postpartum depression की बात चल रही है. Many a times after pregnancy, after the childbirth, some women go through depression because body में hormonal changes बहुत ज़्यादा होते हैं. उसका handle कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है. Along with that, the whole life, everyday life, sleep, food, everything gets affected. So that is also an issue sometimes, but not with all women. Now, till now, any questions, any doubts? Yeah. Clear hai? Okay. So now we come to mood swings. ये तो हो गया sadness. तो ये जो बच्चे आजकल बोलते हैं ना, oh I'm sad, oh I'm depressed. It's better not to use such words so lightly. ठीक है? Now mood swings, feeling कहते हैं ना the blues, feeling low. Sometimes we do feel low, then we come out of it. What is happening here? There are reasons behind it. First is PMS, premenstrual syndrome. Girls have it. 2-3 those days or to 1 week before the first day of your bleeding. Not all girls, but few of them have very strong mood swings. बहुत गुस्सा आएगा, फिर तुरंत रोना आ जाएगा, फिर तुरंत ठीक हो जाएंगे, you know, समझ में नहीं आता. And the girls are aware of it. कि I don't know, but I'm very cranky. That happens. Then hormonal imbalance. जब भी किसी को ऐसे mood swings आते हैं, extremes होता है, it is always better to get hormonal checkup done. Not just girls, even the boys have it after puberty, because the body is changing so fast. Hormonal changes are happening at such a fast rate that at times it becomes a little difficult to handle it. Then side effects of medicines. If you are on medication for something or the other, then also it may be the reason. Chronic illness, chronic pain that we have, migraine hua, headache hua, bodily aches and pains which are not going away. They may also create mood swings in the person. Lifestyle, I'm coming to lifestyle. I'll be talking about lifestyle after 2-3 slides. This lifestyle includes physiological bodily needs also. Now, what are these physiological conditions? Sleep, water, nutrition, and oxygen. Here, I'm going to talk about, I'm focusing on preventive measures also. That means life situations will be changing, ups and downs will be coming, no doubts about it. Setbacks will happen, kuch na kuch hoga hi hoga. Lekin these are momentary phases of our life, and we come out of those phases, we bounce back to life. The only issue is how quickly, how smooth is the transition from a setback to the normal life. To keep it very smooth, the transition, or to keep it very smooth to bounce back on life, what we need to focus on? Hormonal imbalance, medical conditions, health conditions, I have already discussed. Doctors are available. Take guidance, take help from them. Then understand, for humans, as humans, we have 3 conditions: thoughts, emotions, and behavior. So, and all these 3 are affecting the body. Body is actually the doer. So what I'm thinking, oh, life is so difficult. Fine, life becomes difficult. And when I am thinking constantly, oh, life is so boring, life is so difficult. Now, what is this creating the emotion in me? What is the use of doing anything? Why should I work so hard? There's no motivation, because life as it is difficult, no. So what can I do? Now, with that comes the negative emotion. Now, when I'm having these emotions of so down, so difficult, so my whole body is getting affected. My behavior is no life, no laughter.
How can I do that? So over a period of time, when you are constantly going, following a particular thought pattern, and that thought pattern is constantly creating the same emotional state, so at the end of the day, the body will take a toll. It will affect the body. And if the body is taking a toll, vice versa, reverse the situation. I'm not talking of thoughts and emotions now. Now the body has problem, though you are not fulfilling the basic needs of the body will start creating trouble in the brain, and the brain will start creating conditions of emotions and thoughts. How? Through hormones. I will come to that also. So first and the foremost thing is sleep. Minimum 5 to 6 hours. Those people who are into meditation, they have achieved a level. They do achieve a level wherein 3 hours to 4 hours sleep is very healthy sleep for them, very refreshing sleep, and they are okay with it. And then they are full of energy through the day. In between, they take a nap, very short power nap for 15 minutes. Life is perfect for them, but not for all of us. So we common beings need to sleep minimum 6 hours to 7 or 8 hours. Why? When we sleep, our body rejuvenates, wear and tear पे काम होता है, ठीक है, बिकॉज सारे मैक्सिमम जो बॉडी इंटरनल ऑर्गन के जो फंक्शंस हैं, कुछ तो खत्म रुक जाते हैं, कुछ बड़े स्लो चलते हैं, जैसे ब्रीदिंग सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, तो बॉडी पे कोई प्रेशर नहीं होता है, ब्रेन हमारा शांत होता है, तो उसमें क्या होता है, जो सेल्स का जो वेयर एंड टेयर होता है उसके ऊपर बॉडी काम करती है. सो व्हेन वी आर नॉट अलाउइंग द बॉडी टू हैव दैट those many hours of refreshing sleep, and I mean healthy sleep, डिस्टर्ब स्लीप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है. तो जब वो हेल्दी स्लीप होता है तो बॉडी को अपने ऊपर काम करने का पूरा मौका मिलता है, एंड सो बाय डिफॉल्ट हम लोग हेल्दी होते हैं. जब सो के उठते हैं, वी फील फुल ऑफ एनर्जी, वी फील रिफ्रेश्ड. देन 70% बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, आई थिंक आई हैव रिटन इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, वेट अ मिनट. Yeah, I have written the left. Okay, so तो ये हो गया स्लीप. देन 70% बॉडी का कंटेंट क्या है? वाटर है, प्योर अनअडल्टरेटेड वाटर, मींस सिंपली पानी पीना होता है. और अपन क्या करते हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी कॉफी पी रहे हैं, कभी ये सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं, कभी कोई ड्रिंक ले रहे हैं, कभी कोई ड्रिंक ले रहे हैं. दैट डज नॉट रिप्लेनिश द नीड ऑफ वाटर इन द बॉडी, ठीक है. सो we need to be very constantly, we need to be aware of the water content in the body, because water रहेगा fulfilled means इसका indicator ये है कि generally 2 to 3 hours में you should have the need to go for urination, go to the washroom. That means things are fine. सर्दियों में थोड़ा बढ़ जाता है, गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है, because we have lot of sweating during summers. Then comes our nutrition. टेस्ट बड डिसाइड करता है कि हम क्या खाएंगे. जनरली इफ वी कैन हैव अ डाइट विच इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन टेस्ट बड्स, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, राइट. बहुत नेट इंटरनेट भरा पड़ा है इस ज्ञान को लेकर के कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल गाइडलाइन, दैट the traditionally what our mothers have eaten, means my mother when I was in her womb, when she was pregnant with me, and what her mother has eaten, that food is actually a food which our body is very much used to it. We can digest that food. वो हमारी बॉडी को आदत है उस फूड की, ठीक है. सिंपल गाइडलाइन दे रही हूँ, and whatever the body can digest. We understand lot many things. Nutritionists are there, plenty of them. Net is full of nutritious food. At least minimum one meal we can think of having with full nutrition. And cheat day we always can do. Focus रहना चाहिए nutrition पे. Then comes oxygen. Brain. 30% body में oxygen है, and brain को का जो nutrition है वो है oxygen, and oxygen is provided, goes to the brain through the blood, right? So how you provide the blood, the flow to the brain is up to us. Running, jogging, ठीक है.
रनिंग, जॉगिंग, प्राणायाम, योग, whatever it takes, स्पॉट जॉगिंग करो, कुछ भी करो, 10 to 15 मिनट्स अपने आप को टाइम देना है, सो दैट वी वर्क ऑन द ऑक्सीजन। तो बॉडी को अपने आप रिजुवनेशन मिलता है। ब्रेन जब हेल्थी होता है तो बाय डिफॉल्ट जो कमांड आता है, जो क्लैरिटी होती है ब्रेन की, और विद दैट क्लैरिटी द कमांड दैट ब्रेन गिव्स टू द बॉडी इज परफेक्टली ओके। बहुत ही अच्छा मशीन भगवान ने बनाया है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस परफेक्ट बॉडी को कैसे इज्जत के साथ रखते हैं। The respect that we can give, the love that we can give to this body, okay, that is up to us. Here it is, lifestyle. Right and wrong I will not say, but in last few years there has been a trend night out का, all nighter बोलते हैं इसको, all nighter, night out means पूरी रात जागना है। क्यों जागना है? For so many reasons. Now one night, okay, you do not sleep. What will happen? There is a sleep deficit. जैसे हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट जब होती है 6 to 8 आवर्स की, और हम उस उतना स्लीप उसको नहीं देते हैं, तो एक चीज कहलाती है स्लीप डेफिसिट। दैट मीन्स कि उतने घंटे की स्लीप हमारी बच जाती है। तो वीकेंड जब हम सोते हैं तो कभी ध्यान दिया है कि वैसे तो हम इतना नहीं सोते हैं, लेकिन जब सोते हैं तो 12 घंटा 13 घंटा सो रहे हैं, बिकॉज बॉडी जो है वो रिकवर कर रही है स्लीप को, विच इज अगेन नॉट हेल्पिंग आउट, बिकॉज फिर हमारा इतना लंबा जो स्ट्रेच जा रहा है वो दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, फिर हैवीनेस होना, आंखों में स्वेलिंग आना, भगवान जाने क्या क्या। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि ऑल नाइटर्स क्यों? बिकॉज ह्यूमंस बाय नेचर आर नॉट नाइट क्रीचर्स। हम लोग निशाचर नहीं है, ठीक है? तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द सर्केडियन रिदम दैट वी हैव इन द बॉडी, और हम जब उस रिदम को बिगाड़ते हैं ना तो उसका असर भी हम ही को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में बीमारियां आती हैं, इरिटेशन होना, स्किन की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, रिफ्रेशिंग स्किन नहीं होती है, जितना मर्जी मेकअप करो, जितना मर्जी ब्यूटी पार्लर में जाओ, दैट डजंट वर्क आउट। सो दिस इज रिक्वायर्ड। और ये जो कॉन्सेप्ट है पार्टी का, कि पार्टी करेंगे, पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी करेंगे, पार्टी का मतलब होता है एंजॉयमेंट। यू गो, you enjoy, you have fun, and then you come home, because everything has an expiry date. When we try to stretch it, booze, नशा करना, आपने enjoy करना है, आपने नशा करा, एक सुरूर जो होता है, you feel a little high, you enjoy, and then you come home, you come back. But when this high is not enough, थोड़ा और पार्टी, अभी मजा नहीं आया, थोड़ा और पार्टी, अभी और पार्टी। Now where is this leading us on? Over a period of time, पूरा का पूरा स्लीप पैटर्न, पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन पैटर्न है, पूरा का पूरा जो वाटर का इनटेक हम बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज गेटिंग अफेक्टेड। वंस इन अ वाइल समझ में आता है, बट देयर ऑल्सो इट शुड नॉट बी अ हैबिट। नाउ कम्स दी स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम का मतलब सिर्फ लैपटॉप लेकर बैठना नहीं होता है। स्क्रीन टाइम मीन्स द टीवी दैट वी वॉच, द लैपटॉप, सेल फोन। हाउ मच टाइम आर वी स्पेंडिंग हियर? अगर आप चैटिंग कर रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर हो, फेसबुक पर हो, दैट इज ऑल्सो स्क्रीन टाइम, राइट? एंड देन ईटिंग एज पर दी टेस्ट बड्स की हम बात कर चुके हैं। अभी एक चीज मैं और बताने जा रही हूं। यस, या फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए करना क्या है? रेपिटेशन जारी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन्स सोने से जस्ट पहले, वंस वी आर ऑन द बेड, व्हाट डू वी डू देयर? सेल फोन और समथिंग इन द ईयर्स। नाउ whatever we have watched, all of that goes with us in our sleep, and that whatever we have gone through just before sleep or few hours before sleep goes in the mind and is repeated in the mind, and then that becomes a dream. Refreshing sleep we do not get, and we get up disturbed. जो sleep का purpose होता है वो पूरा नहीं होता है।
दूसरी चीज, स्लीप में जो हम 6 घंटा सोते हैं, उसमें ब्रेन क्या करता है? ब्रेन दिन भर की जो हरकतें हैं, जो हमने what we have gone through the day, our fears, our anxieties, our learnings, our everything, how we have felt. जब हम सो जाते हैं तो ब्रेन क्या करता है? देखता है what is important and what is not important. So whatever is important is saved in a folder. पॉजिटिव फाइल, नेगेटिव फाइल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, एंड वॉट एवर इज नॉट रिक्वायर्ड, इररिलेवेंट, जो माइंड्स को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, दैट इज वेंटेड आउट. तो वो जो वेंटिंग आउट होती है वो थ्रू ड्रीम्स होती है. ठीक है. सो जब हम कॉन्स्टेंटली सोने से पहले सब हरकतें कर रहे होते हैं तो ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है. दिन में भी एक्टिव है बिकॉज हम इसको आराम तो देते नहीं है, सोते समय भी हम उससे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं. ठीक है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, उसके बाद इट कैन नॉट सर्वाइव, इट विल शट डाउन. तो वो ब्लैंक हो जाना, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एकदम से क्या हो गया पता नहीं चला. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. व्हाई? बिकॉज ब्रेन का एक ही फंक्शन है विच इज सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो इफ वी कैन डेवलप अ हैबिट वेयर इन वी जस्ट have a ritual कि सोने से, if I want to go say sleep by 11 p.m, that means by 10 p.m I should have done with all my activities. क्या पढ़ना है, क्या देखना है टीवी पे, क्या चैटिंग करना है, क्या सर्फिंग करना है, everything is done. And then I am, मैंने पैर धोया, पैर धो के I go to the bed and then I just go through the day. आज मैं दिन भर में क्या क्या किया, and किसी से सॉरी बोलना है, किसी के प्रति सॉरी है, किसी के प्रति गुस्सा आया, जो भी हुआ, जस्ट मेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दिस कि टुडे आई हैव एक्सपीरियंस्ड these emotions, these activities, today I have learned these things, whatever, and then go to sleep. तो वो जो बर्डन ब्रेन पर आता है, माइंड के ऊपर आता है, फिर वो नहीं आएगा. अगर हमने एक टाइम शेड्यूल बना लिया, टाइम से सोना कि हाँ 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, whatever is convenient as per the lifestyle, it is better to develop a schedule so that by default, जैसे ही तुमको, जैसे कभी होता है ना, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाती हूँ तो जो हमारा लंच टाइम होता है ना, बाय डिफॉल्ट हमको उस समय भूख लगती है, और उस समय हम कुछ भी खा लें, थोड़ा भी खा लेते हैं तो हम वी हैव दैट सैटिस्फाइड फीलिंग कि हाँ हमारा पेट भर गया, फिर भूख नहीं लगती है. और अगर हमने उसमें खाना नहीं खाया, वो टाइम निकल जाता है, तो हम हुआ क्या है, बॉडी हैज बिकम यूज्ड टू इट, एक कंडीशनिंग हो जाती है. ठीक है, कि इतने समय भूख लगेगी, इतने बजे नींद आएगी. तो नींद के लिए भी हमारी बॉडी की कंडीशनिंग होती है, वो हम डेवलप करते हैं. और जब हम ये डेवलप कर लेंगे तो जो लोग कहते हैं कि हम बेड पर जाते हैं, हमको नींद नहीं आती है, पूरी रात हम जागते हैं, कुछ कुछ सोचते हैं, करवटें बदलते हैं, फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. ठीक है. सो शेड्यूल हो गया और हमने एक हैबिट डेवलप कर ली, बॉडी की कंडीशनिंग कर दी, एंड डिस्ट्रेस डीकटर हमने माइंड को कर ही लिया है. वाटर हम समझा चुके हैं, ऑक्सीजन हम समझा चुके हैं, न्यूट्रिशन हम समझा चुके हैं. नाउ कम्स लाइफ कैन नॉट बी लिव्ड हेल्दीली एंड हैप्पीली if these 4 physiological needs are not met. While another physiological need is sex. We cannot live healthily and happily without sleep, without water, without oxygen, and without nutrition. Without oxygen, 1 minute, max to max 2 minutes. Without water, body will survive, say, I think 1 week, 10 days. Without food, proper food, nutrition, maybe 1 month. No, without nutrition we will live, without food we will not live. And when we do not give nutrition to our body, then there is a craving. हमारे अंदर craving होती है, कुछ खाना है, मीठा खाना है या खट्टा खाना है. क्रेविंग क्यों हो रही है? बिकॉज बॉडी बार बार कह रही है, बॉडी मैसेज भेज रही है ब्रेन को कि देयर इज अ डिप्लीशन इन द न्यूट्रिशन लेवल्स, और ब्रेन वहां से कमांड भेज रहा होता है, हंगर पैंग्स हो रहा है, क्रेविंग हो रही है, सो दैट वी एक्ट अपॉन इट, so that the organism starts looking for food, water, whatever is required. So that is what the craving is all about. Still, तो ये हमारी necessities हो गई कि we have to focus on these things, but
we can live without sex. This is a life force, energy, eros keh lo, life force keh lo. This can be channelized for not many creative work. We can survive, we can live happily. But these four, no, we need to focus. And when we are not focusing, and this is major reason why so many people, youngsters, are going through mood swings, sadness, depression like conditions. I will not use the word depression right now, but the symptoms are similar because of these reasons. Heartbreaks हमने बहुत क्रिएट किया है अपने लिए. Now, when these are not taken care of, then the effect on the body and the mind is our mental health. From here begins the journey of either healthy mental health or unhealthy mental health. That depends on us, how we handle our everyday life. So mental health is not just absence of illness, it is well-being. Well-being का मतलब होता है living life with full potential. And when we say live life with potential, it means in all aspects: thought level, emotion level, body level, and behavior level. This is what is the major aspect wherein we need to focus on. इसी में प्रॉब्लम आती है यहीं से, और यहीं पर हमारा सॉल्यूशन भी है. तो वो जो कंडीशन होती है डिप्रेशन की, क्लिनिकल डिप्रेशन, वो आएगा ही नहीं, बिकॉज वी आर इन अ पोजीशन टू हैंडल अवर सिचुएशंस. Any doubts till now? Any questions? Okay, I see one face. She says no. And if you have, please raise, let me see. Raise your hands, anyone, if you have any questions. And in the meanwhile, I'm continuing. Yeah. Thought, emotion, behavior are intertwined with one another. They act as cause and they are effect of each other. For example, you think, you feel, and you behave. Like abhi maine example diya, life is very tough. I have no choice. I have to do it. Every time the constant statement coming is, there is no choice. कोई ऑप्शन नहीं है. अब जब कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, जब यही हर सिचुएशन में आता है, तो फीलिंग क्या आती है? I am helpless, means I am out of control. My life is out of control. So when life is out of control, when I am out of control, that means I have to compromise because I have no choice. When I have no choice, so I have to compromise. So how I feel, the feeling is frustration, irritation, lost, helpless, कि I can't do anything. And जब ये feeling आती है तो body क्या है? Helplessness, gloomy face. And फिर body में क्या आएगा? Sadness. क्यों? क्योंकि brain को पता नहीं है कि problem है कि नहीं है. What is happening here? Understand the function. Body को हम बार बार message, brain को हम बार बार क्या message दे रहे हैं? Life is tough. I have no choice. This is a difficult situation. तो ब्रेन को मालूम है कि अगर डिफिकल्ट सिचुएशन है एंड यू हैव टू फेस द सिचुएशन, देन यू नीड एक्स्ट्रा एनर्जी. दैट मीन्स द ब्रेन विल स्टार्ट रिलीजिंग एंजाइम्स, न्यूरोकेमिकल्स क्या रिलीज बढ़ जाता है, सो दैट द ऑर्गेनिज्म, द इंडिविजुअल गेट्स एक्स्ट्रा एनर्जी. और उस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करना है? यू आइदर रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन और यू फेस द सिचुएशन. फाइट, फ्लाइट. You fight the situation, you flight from the situation. आप लड़ते हो या फिर आप भागते हो, दोनों के लिए शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए. ब्रेन वो आपको देता है. बट ब्रेन को ये नहीं पता कि सामने सिचुएशन एक्चुअली में डेंजर सिचुएशन है या फिर परसीव्ड है, कि हम कहते हैं कि डेंजर है. डिफरेंस ब्रेन को नहीं पता है एंड यहां से शुरू होती है प्रॉब्लम. कॉन्स्टेंट चैटर इन द माइंड चला आ रहा है, तो ये सब ड्रेन कर रहा है हमारी एनर्जी को. ये देखो पूरी बैटरी लूज हो गई है. फोटोग्राफ्स अच्छी लगी, तुमने लगा दिया. या नाउ व्हेन देयर इज नो फाइट, नो फ्लाइट, द थर्ड सिचुएशन इज फ्रीज. फ्रीज का मतलब होता है
can't do anything, play dead, kind of dead. That is depression. Feeling of helplessness, right? Life being out of control. I have no choice. You carry on. We have it. So now basically understand what is happening here. हम अपने आप को क्या फीड कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, तीनों चीजें मिल करके असर डालती हैं. एंड जो बॉडी है उस पर ही असर आता है. बॉडी है जो विच इज गोइंग थ्रू ऑल दीज डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. So that is why understand you are not depressed. Depression is not something which is happening in a day and goes in 2 days. No, it doesn't happen. Mood swing, yes. Sadness, yes. Feeling low, yes. There is a reason. There is a logical reason. There is a cause, yes. Then you come out of it. You cope up. Basically, there is a defense mechanism. There is a coping mechanism. There is a situation. You get involved with the situation, you react to the situation, then you cope up with it. But when the coping mechanism fails, when we do not cope up or are not able to cope up, then that state either at thought level or at emotion level, चाहे वो emotion पहले हो चाहे thought पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because दोनों ही एक दूसरे के cause and effect हैं. Over a period of time, when they continue like this, then the depression sets in. ठीक है? Here it is. Fight, flight, freeze. एक और आ गया है fawn. Means this is a masking. I am masking my sadness. I am masking my depression. How? I am trying to please people all the time. And when I please people, then people around me feel good. Then I feel good because they are telling me, oh, you are so nice. But in my heart, I am not feeling good. Why? Because I'm doing something with what I may not be liking. I'm doing it for somebody else because someone else is expecting that from me. It is not what I want to do. So that is also influencing us. So this also becomes one of the symptoms, telltale sign to understand, yes, you are going through depression. Then comes, continue. The most important function of the brain is survival of the organism, hence secretion of hormones. When we do not fight, flight, we become, and we continue to think the situation, the same thing I have just now explained. अब हम आते हैं the actual topic of depression. Having ruled out all of these conditions, wherein I have talked about sadness, I have talked about mood swings, I have talked about lifestyle, I have talked about physiological needs. And if we have taken care of all of these things and still something is persisting, then the symptoms, I'll be reading about it. And the diagnostic criteria is given by DSM-5 and in ICD-10. A person has to fulfill those categories. Then you say, yes, there is a clinical depression. And when there is a clinical depression, then medicines are required. Psychiatric help is required. And once you visit a doctor, you take the medicines, then you have to start the therapy. Then you start working on finding the cause and working for it. What could be the cause of the depression? You actually need to work with that, because medicines will be working with the symptoms. नींद नहीं आती है, नींद की दवाई खा लो. रोना आता है तो एंटी डिप्रेसेंट्स दे दो. एंजाइटी है तो एंटी एंजाइटी पिल्स ले लो. तो जो सिम्टम बॉडी में होते हैं उसके ऊपर मेडिसिन काम करेगी, क्योंकि उसी की मेडिसिन दी जाती है. सो यू टेक द मेडिसिन, you deal with the situation, the problem will come down, then start working on yourself. Go for a counseling, go to a therapist, take therapy, do it yourself, understand what is the cause, why in the first place the depression happened, and deal with it. Otherwise, you will continue taking medicines, then the side effects of medicines, and life is like that.
That is why at the very onset, I did not talk about depression. I talked about all those things which generally lead towards depression and which are actually something you can go through and prevent depression from happening. Simple. Second is because every mood, every issue is not actually depression. पता नहीं है ना, आदत सी पड़ गई लोगों को. And casually मैं ये बोलती हूँ कि डिप्रेशन जो है वो बीमारी नहीं है, शौक है. भाई मुझे अगर आज अच्छा नहीं लग रहा है तो बेस्ट क्या होता है, डू समथिंग जो मुझे अच्छा लगे. बट जनरली क्या होता है, अगर मैं आज दुखी हूं तो मैं सैड सॉन्ग सुनूंगी, तो उस दुख को और बढ़ाऊंगी. नहीं, मुझसे आज कोई बात मत करो, आई एम वेरी सैड टुडे, आई एम डिप्रेस्ड टुडे, I will not talk to anyone. I will listen to sad songs and I want to cry. I will stay inside the room. Lights off रहेंगी. So what are we doing? The low energy को हम और ज्यादा लो करते हैं, उस लो इमोशन को और ज्यादा लो करते हैं. करना क्या है, ओ आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. क्या करना चाहिए? Go out, change your dress, wear some bright clothes, create brightness around you. फटाफट सारी लाइट्स ऑन करो, जाके बाहर वॉकिंग करके आओ, जाकर किसी पेट को प्यार करो, यू नो, टेक हाई एनर्जी फूड और ड्रिंक. व्हाट, यही मेडिसिन भी करती हैं. तो लो एनर्जी है, उसको आपने हाई कर लिया, मींस अब जिस इमोशनल स्टेट में होते हो उससे बाहर निकलो. बट यही हम नहीं करते हैं. And then we say, oh, I'm depressed. And you want to live in that depression. What is maintaining the depression in you? What are you getting out of that depression? What is it? What is it giving you? Look at it, make sure of it, and then work on it. Now comes the technical part of it, after having understood all of this. So DSM-5 is basically, लिखा है मैंने यहाँ पे, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. शॉर्ट में कहते हैं DSM-5. ऐसे ही है ICD-10, International Classification of Disorders. ये ग्रंथ है, बाइबल है मेंटल इलनेस में. तो जो भी हम सिम्टम्स की बात करते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की हम बात करते हैं, सो ईदर वी फॉलो DSM-5 और वी फॉलो ICD-10. मैंने यहाँ पर डिप्रेशन, मैंने यहाँ पे कोट करा है DSM-5 को. This outlines the following criterion to make a diagnosis of depression. The individual must be experiencing 5 or more symptoms during the same 2-week period, and at least one of the symptoms should be, wait a minute. One of the symptoms should be either depressed mood or loss of interest or pleasure. या देखिए 2 weeks कंटिन्यूअस होना चाहिए. और ये जो मैं पॉइंट्स दिखाने जा रही हूं, इनमें से 4-5 पॉइंट्स आपके अंदर दिखने चाहिए, तब आप कह सकते हो कि यस यू नीड हेल्प. वन इज डिप्रेस्ड मूड मोस्ट ऑफ द टाइम, नियरली एवरी डे, हर रोज और पूरा दिन. मार्केटली डिमिनिश्ड इंटरेस्ट और प्लेजर इन ऑल और ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज मोस्ट ऑफ द डे, नियरली एवरी डे. हर रोज कुछ भी नहीं करना, बिस्तरे पर पड़े रहना है, बैठे हैं तो बैठे रहना है. सिग्निफिकेंट वेट लॉस व्हेन नॉट डाइटिंग और वेट गेन. सडन बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, बिना खाना खाए मैं मोटी हो रही हूँ, बिना डाइटिंग किए मैं पतली हो रही हूँ, देयर इज समथिंग रॉन्ग. स्लोइंग ऑफ द थॉट एंड द रिडक्शन ऑफ फिजिकल मूवमेंट. मींस क्या बात करा आपने, आई एम लॉस्ट. आप बात कर रहे हो मुझसे और मैं पूछ रही हूँ आपने मुझसे क्या बोला. कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है. ये सारी चीजें दूसरे लोग ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स, नॉट मेयरली सब्जेक्टिव फीलिंग्स. जो हम जब अवेयर होते हैं कि नहीं आज तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आज मेरे साथ वैसा हो रहा है, तो ये मूड है, ये सैडनेस है, ये इमोशन है. डिप्रेशन में हमसे पहले और हमसे ज्यादा दूसरे लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है. वी नीड टू लिसन टू अदर पीपल. फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी, हर रोज, एवरी डे एंड फुल डे. एवरी डे एंड फुल डे मीन्स पूरा दिन. ऐसा नहीं है कि सुबह आई वाज फटीग में थकी हुई थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ करने की, हाथ उठाने में तकलीफ हो रही है, एंड पोस्ट जो आई एम रेडी फॉर द पार्टी.
I cannot be ready for the party if I'm depressed. Feelings of worthlessness, excessive or inappropriate guilt every day, full day, every day. Diminished ability to think or concentrate, indecisive. डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, कुछ भी, ये पहनूं कि ये पहनूं, बाहर जाऊं कि ना जाऊं, नहाऊं कि ना नहाऊं, छोटी छोटी चीजों को लेकर के भी यही प्रॉब्लम्स है. But again, every day, full day, and continuously for 15 days. Recurrent thoughts of death, suicidal ideation, without a specific plan. Planning नहीं है, suicide करना नहीं है, मर जाते तो अच्छा रहता. ऐसी भी कोई जिंदगी है भला? Thoughts. क्योंकि जो suicide होता है वो बाद में होता है, पहले ideation होता है. To receive a diagnosis of depression, these symptoms must cause the individual clinically significant distress or impairment in social, occupational and other important areas of functioning. मतलब कहने का ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ की वाट लगती है in all the areas, not just profession. कि जब मैं ऑफिस में हूं तो मैं डिप्रेशन में हूं, घर पे आके मैं ठीक हो जाती हूँ, नहीं. डिप्रेशन अगर है तो दिखेगा, उसका इम्पैक्ट होगा in every aspect. चाहे वो मेरी फ्रेंड सर्कल हो, चाहे मेरा खाना पीना हो, मेरी घर में लाइफ हो, मेरे घर के बाहर की लाइफ हो, मेरा करियर हो, whatever it takes, या मेरी पढ़ाई लिखाई हो, everything would be affected. Then we say, अब यहाँ पे मेडिकल कंडीशन हो गई है, यहाँ पे मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, दवाइयां लेना जरूरी हो जाता है. Yeah. Now I'm ready for the questions.